Yeah, so now we'll continue with the long answers. Question number one, that Salma takes 15 minutes to reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meter per second, calculate the distance between her house and school. First of all, क्या निकालना है हमको? Distance निकालना है. So that you have to write down that what is given in question. What is given in question? Time is given 15 minute. We are writing this from question only, and that speed is given 2 meter per second. See, I told you before that unit should be same, like here meter per second, so time should be in second, but here it is given in minute, so we have converted minute into second. So 1 minute is equal to 1 minute is equal to how many seconds? 60 seconds. So we have multiplied by 60, so it will be converted into second. So now same formula, speed is equal to distance upon time, but we have to find out d. So d we will keep in this side and s and t will be multiplied. S means speed, t means time, that we have converted into second. So now distance will come in meter, because what is the unit of distance? Meter. If it is speed, then it will come in meter per second and all. ओके डिस्टेंस है तो सीधे सीधे किलोमीटर या मीटर होगा, टाइम है तो सेकंड या आर होगा, बट स्पीड है तो मीटर पर सेकंड होगा या किलोमीटर पर आर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a car moves with a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then with a speed of 60 km per hour for next 15 minutes. Like two cases are there, two cars, one 40 km per hour in 15 minutes, second 60 km per hour in 15 minutes. So total distance we have to find out. Total distance कितना cover किया कार ने. The same way write down first that speed 40 km per hour, time 15 minutes. Okay, see, these are not matching here. It is in hour, time is in hour, here minute. That means this minute we have to convert into hour. So अब छोटे से बड़े में convert करते हैं तो divide होता है. So 1 minute में कितने 1 hour में कितने minute है? 60. So we will divide it by 60. This conversion you already you have learned in maths. Okay. Then too you just revise. If you are having any confusion, you can ask also. So we'll get 1 upon 5. Now in same way, then 60 kilometer it covers in 15 minutes. So find out here this minute converted into hour. That means 15 divided by 60. So we are getting this 1 by 5 hours. Same it is. Then for this case, first speed is equal to distance upon time. The distance निकालना है तो speed into time. Speed 40, time 1 by 5. So 8 kilometer. Similarly, in second case, we are getting 12 kilometer. Okay. So total distance 8 plus 12, that means 20 kilometer. So the main important thing is that only you have to see whether the units are appropriate or not. Now the next question. Question number 3. Rohan covers a distance of 10 kilometers by running with a uniform speed of 4.5 किलोमीटर पर आवर. सो हियर यूनिट्स आर प्रॉपर ओके. स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया, मतलब टाइम निकल जाएगा. अब यहाँ पर सोहन कवर द डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर इन 15 मिनट्स, मतलब मिनट को आपको आर में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो यहाँ डिस्टेंस दिया है और टाइम, स्पीड निकालना है. और यहाँ पे स्पीड दी थी और डिस्टेंस, तो हमने दोनों अलग अलग चीज़ें निकाली. बट हम कैसे कंपेयर करेंगे कि हु रन्स फास्टर? बाय नोइंग स्पीड. यहाँ 4.5 है, यहाँ निकालो स्पीड कितनी होगी. तो यहाँ पर आपको जब स्पीड आ जाएगी देन यू कैन कंपेयर. सो सी डायरेक्टली वी हैव डन दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन इन दिस वे. रोहन का निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्पीड दी हुई है. आप डायरेक्ट सोहन का निकाल सकते हैं, बट आई हैव डन इन दिस वे. यू कैन सी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. फॉर सोहन 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस है और 15 मिनट. तो 15 मिनट को हमने, ये देखो सोहन का दिया है 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस और टाइम 15 मिनट, जिसको हमने आर में कन्वर्ट किया. दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 60. सो यू विल गेट 1 by 4 आवर. ये आ गया. अब इससे आप स्पीड निकाल लो. तो आई 4.8 किलोमीटर पर आवर. और यहाँ पर रोहन की दी है 4.5. तो हु रन्स फास्टर? सोहन ट्रैवल्स फास्टर. सोहन रन्स फास्टर. So just you have no need to find out time here. Just I have taken out, like sometime if it is asked you can do
Otherwise, you just have to calculate the speed of Sohan. Then you can compare with the speed of Rohan. Okay? So these are all about numericals. And if any doubt, you can ask. Thank you. God bless you.